So, very good evening to all of you. Sunday evening. It is 6:30 p.m. in India. I'm taking this session from Tokyo, and it is 10 p.m. over here. 3.5 hours ahead we are. I'm taking this from my hotel room, because of which the light on me is perhaps a little dimmer. How are you all? How is cold at your place? You all can reply. We have around 3-degree temperature over here. What's the status at your end? Yes, please. You all can type in the comments. What is the temperature at your end? It just eases out, the discussion. It doesn't seem to be very formal. And it seems that we are going to discuss stuff which is very easily relatable. I heard in Calcutta this time, winters are too cold. Okay, this type of cold has not been experienced for decades. That's what people back home inform me. So I'll be experiencing that as soon as I reach Calcutta by the 13th. Anyways, given all this discussion, uh, let's carry out the agenda for today's session. So the agenda is the CFA Level 1 program. What is so special about it? Why does it so happen that I am never exhausted talking about it, and I will never be? Because every day I'm coming across more and more people who surprise me on the positive side having done CFA. You may be aware that last week FRM results came out. Congratulations to all those who have cleared the exam. So yesterday night, I was taking an interview of two of the successful FRM candidates. And please listen to me. One of them was Vaibhav, he was from Karnal, and the other was Keval, and he was speaking from US. He is originally from Akola, Maharashtra. So एक करनाल का बच्चा और एक महाराष्ट्र. Both of them did their PGDM, did their MBA in finance after their graduation. And they found that the pickup was not there. MBA करके वो पिकअप नहीं मिल रहा था, सेल्स का रोल मिल रहा था या कोई और रोल मिल रहा था जो कि ऑपरेशंस का था. They found that somebody who, while they were doing MBA, was doing CFA or had completed CFA, that guy's pickup was very well. He was accepted in the industry as an analyst, and he went on to make a great career, and therefore these people decided that they will pursue the CFA program after MBA. So MBA खत्म होते ही उनको CFA करना पड़ा. And when they did the CFA, all the doors were opened. मैंने वो सारे doors, दरवाजे जो बंद थे ना, वो खुल गए. Because वो दरवाजों को खुलने के लिए either you have to have experience or you have to have solid certifications. And look at the character of these two guys. After having completed their CFA, they went on for FRM. Because CFA and FRM, दोनों का combination has become an arbitrage opportunity. CFA के बाद या लेवल 1 लेवल 2 के बाद जो लोग FRM करते हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन हो जाता है ना CFA प्लस FRM मिला के, that becomes so receptive to the finance community, be it the banking sector, the insurance sector, okay, the equity research space, the private equity space, the private credit space, the venture capital space, you name it, and you will find that there is a great demand for knowledgeable, passionate people who are ready to immerse themselves in the field of finance. Wealth management is another area which is blossoming like anything.
and where people with interactive skills, जिनको ह्यूमन टू ह्यूमन डीलिंग करना आता है, दे आर मेकिंग ग्रेट प्रोग्रेस. ऐसा क्या चीज है जो सीएफए में कवर्ड नहीं है? व्हाट इज इट? एवरीथिंग इज कवर्ड इन द सीएफए प्रोग्राम. It has such great prospects both in India and globally, I can't explain. The only point is that people who are pursuing CFA later on, not while they're in graduation, but after graduation, say along with their MBA or after MBA, they are blocked in terms of how do they get out time to study. Somehow Vaibhav and Keval, they took out time from their busy schedule. In fact, one of them said that 6 p.m. पे ऑफिस खत्म होती थी और ऑफिस में रुक जाता था बिकॉज शांति रहती थी, एंड 9:30-10 बजे तक रोज पढ़ता था. That was what I think Vaibhav said. I'll upload the interview. You should definitely watch short interviews. So they had to do that hardship to do the program. And therefore, I have been over the last 30 years of my teaching experiencing people saying that, sir, अगर मेरे पास अच्छा बैकग्राउंड है और मैं पिकअप कर सकता हूं आपका स्टफ बढ़िया से, ओके, मेरे को ज़्यादा स्पून फीडिंग नहीं चाहिए, ठीक है, but it's not that, sir, you have to repeat 10 times for me to understand. It's that you say something one time and I'll understand. It's not that, sir, you have to solve 500 questions. You solve representative questions and I will pick it myself. So give me less time का कोर्स. मतलब जो 600 प्लस आवर्स लगते हैं मेरे कोर्स में, उसके बदले सर 250-300 आवर्स का कोर्स निकालिए. एंड इतने सालों बाद अल्टीमेटली आई वाज एबल टू फाइंड टाइम, बिकॉज अभी मेरे सीएफए बॉडी में चढ़ा हुआ है. मतलब it should not be said, but then what I'm trying to say is that abhi people who are preparing for the CFA program, any vendor across the globe, they are not even matlab within 5-10%, 15-20% of the level at which we are operating. Matlab we are operating way beyond means. So in that case, we are bringing out a product जो कि 250-300 hours का product है, जो सैटरडे संडे स्टार्ट हो रहे हैं 17th जनवरी से लाइव है, फुल लाइव. 17 जैन सैटरडे को 3 क्लास होगी, संडे को 3 क्लास होगी, सुबह 8 बजे, दोपहर में 3 बजे और रात को 7 बजे. देयर आर 3 क्लासेस. ऑब्वियसली तीनों क्लासेस मैं नहीं लूंगा. आई विल टेक द फर्स्ट वन, द मॉर्निंग क्लास जो 8 AM वाला है, एंड 3 PM एंड 7 PM क्लास शैल बी टेकन बाय CFA charter holders who had studied with me earlier and who know the philosophy with which SSEI operates. I had shared a YouTube video. I'll request BD to share the link of that, wherein I had introduced both the faculties. One is Buddhaditya Devnath, who is a CFA charter holder, who is a senior analyst at a family office managing more than 1,000 crores, who is a brilliant academician and combines practical along with it. Some of his sessions on PSM, practical skills module, are available on YouTube. You should definitely watch to see his style of teaching. And the other is Anurag Sharma, who is a chartered accountant as well as a CFA charter holder. He's working at a prominent investment bank, and he has had extensive experience in all fields, especially working in EY and right now in an investment bank. Anurag has been a teacher with SSCI for the last 6-7 years in various streams, and brings with him a lot of experience in terms of interviewing people, because वो hire करता है लोगों को अपने investment bank में. So I think और एक flavor आप लोग को मिलेगा. ये कोर्स में हम लोग को 250-300 आवर्स लगेंगे, जबकि नॉर्मल कोर्स में 600 आवर्स प्लस लगता है. रीजन क्या है? रीजन है, नॉर्मल कोर्स में मैं डिक्टेट करता हूं. इस वाले प्रोग्राम में डिक्टेशन नहीं होगा, स्क्रिबलिंग होगा बोर्ड पे. वी विल शेयर द नोट्स बिफोर ईच क्लास so that you can read the notes in case you want to, or after the class. Normal batch में I solve a number of questions, say at least 50 to 100 questions per chapter. इस particular batch में हर chapter में there will be 10, 12, 15 questions that we'll share. नॉर्मल बैच में वी इंटरैक्ट अ लॉट वाइल टीचिंग. हाँ, बताओ कौस्तव क्या बोल रहे हो, बताओ विवेक क्या बोल रहे हो. वी डिस्कस अ लॉट. पर इस बैच में वी विल नॉट डिस्कस दिस वे. हाँ शुभांकर तुम बताओ क्या हाल है, क्या क्या बोल रहे हो. तो इट वोंट हैपन दिस वे. डाउट्स विल बी टेकन,
but doubts won't be taken in class this way, the way it happens in the normal batch. And if somebody were to say, sir normal batch में कैसे होता है, मैं कैसे समझूं? भाई क्लासेस है यूट्यूब पे, ठीक है? तो इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर्स, कंपनी एनालिसिस पास्ट एंड प्रेजेंट, उसके पूरे 11 क्लासेस का वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। कोई कर ले तो धन्य हो जाए कि क्या होता है रेवेन्यू फोरकास्टिंग, क्या होता है ईपीएस फोरकास्टिंग, वो सारा खोल खोल के कराया हुआ है। तो यहाँ पे उस तरह से खोल के तो नहीं होगा। यानी कोई स्टूडेंट है जिसको उस तरह से पढ़ना है कि नहीं सर आप रुकिए, थमिए, एग्जाम्पल लीजिए, डिक्टेट कीजिए, इंटरैक्ट कीजिए, वैसे करना है उसको, तो मेन कोर्स इमर्जन, फुल इमर्जन प्रोडक्ट लेना चाहिए। Just because the Saturday Sunday course is of a lower number of hours and lesser price does not mean that people should jump into this one. Okay, it is meant for a certain type of audience. Okay, especially those audience who are belonging to the working profile. Okay, who want Sanjay Saraf's classes but at the same time are really not able to devote the 600 plus hours. Now given this product will have audio summary, हर क्लास के बाद ऑडियो समरी होगा, हर चैप्टर का मॉक टेस्ट होगा। ओके, डाउट सॉल्विंग पूरा का पूरा इन्वॉल्व है, जहां पे आप डाउट डालेंगे एंड दैट आपका रिप्लाई जाएगा, ठीक है, कि क्या एक्सप्लेनेशन क्या नहीं। सो एवरी फीचर इज देयर इन दिस बैच एज वी हैव इन द नॉर्मल बैच, एक्सेप्ट दैट इट इज स्विफ्ट। ओके, इट इज नॉट वेरी हॉले 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 नहीं है, ठीक है। सो that's the batch which I'm talking about. There are mock tests, there are topic wise tests, there are chapter wise tests. Everything is there in this batch and believe me, nobody does all this. हम लोग अभी वीकली सेशंस कर रहे हैं, डाउट सॉल्विंग का चैप्टर वाइज चल रहा है एसएससीआई में। हम लोग कहीं पे अनाउंस नहीं करते, ठीक है, ना ही हमारे प्रोडक्ट के डिस्प्ले में लिखा रहता है। तो वी ऑलवेज बिलीव इन डिलीवरिंग मोर एज कंपेयर टू व्हाट वी हैव प्रॉमिस्ड। ओके, हाउएवर हैविंग सेड दैट, इफ यू आस्क मी कि सर 100 स्टूडेंट्स अगर आपको ज्वाइन करते हैं सीएफए प्रोग्राम के लिए, क्या 100 के 100 पास करते हैं? माय आंसर इज नो। बट सर मैंने सुना था किसी वीडियो में, यू सेड दैट योर रिजल्ट्स आर ऑलमोस्ट 100% एंड नाउ यू आर सेइंग 100 स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, 100 के 100 पास नहीं करते हैं। इन दोनों स्टेटमेंट को रिकंसाइल कीजिए, बहुत ईजी है। 100 स्टूडेंट जो ज्वाइन करते हैं उनमें से 10 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बाई चांस किसी ने बोल दिया था कि यार सीए टफ है, सीएफए तो कुछ है ही नहीं, 20 डेज 15 डेज पढ़ने से हो जाएगा। कोई यूट्यूबर का वीडियो सुन लिए थे, तो अकॉर्डिंगली दे ज्वाइंड बिकॉज दे थॉट दैट यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है, जबकि यू डोंट नो व्हाट सीएफए लेवल 1 इज। इट्स अ जाइगैंटिक सी। डू वी हैव टू सफर इन इट लाइक सीए? नो, वी डोंट हैव टू। इट्स एंजॉयबल। You don't have to mug up stuff. There is no mathematics involved. There is no trigonometry. There is no AP, GP, permutation, combination. कुछ भी नहीं है. It's enjoyable, commonsensical, business-oriented stuff. Okay, the way you grow your wealth, the way you choose companies which are going to the next winners. किसको मजा नहीं आता? इसको सब में आता है. सबको मजा आता है इस फील्ड में. ठीक है? यहाँ पे उस टाइप का फाइनेंशियल मॉडलिंग नहीं है जो अपने कट कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जस्ट एक्सेल निंजा बन जाते हैं, या जिस तरह का फाइनेंशियल मॉडलिंग लर्निंग ये लिंक्डइन में लोग डाल के दे गेट क्लैप्स फ्रॉम पीपल. These are very deep discussions wherein you pick up companies and go deep inside them. So CFA is a different ball game altogether. Anybody who does not respect CFA program should not join the CFA program. वो पास हो भी गया तो ही फायदा नहीं होगा. तो 100 में से 10-15 स्टूडेंट्स तो मिसगाइडेड वे में ज्वाइन कर लेते हैं. वो लोग 10-15 क्लास करके ही टाटा बाय बाय निकल जाते हैं. ओके, कि क्या बोलते बंगाली में, पारबो ना कर नहीं पाएंगे वैसे वाले. ओके, उसके अलावा देयर आर सम 20, 30, 40 स्टूडेंट्स जिनका सिचुएशन ऐसा होता है कि दे अपीयर फॉर द एग्जाम इन अ प्रीमेच्योर्ड मैनर, प्रिपेयर करे बिना. जैसे आज ज्वाइन किए एंड 3 महीने बाद एग्जाम का फॉर्म भर देंगे, पता नहीं कौन सा रेस चल रहा है, क्या चल रहा है. यू हैव टू गिव टाइम. एटलीस्ट 2 or 3 टॉपिक्स और 4 टॉपिक्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड. देयर टेस्ट हैव टू बी गिवन. ओनली देन यू कैन सिट फॉर द एग्जाम. उसके अलावा लोग समझते नहीं है सीएफए का प्रेपरेशन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन एजुकेशन सिस्टम. इंडियन एजुकेशन सिस्टम में द क्राइटेरिया ऑफ वेदर यू हैव अंडरस्टूड अ चैप्टर और नॉट, द क्राइटेरिया इज क्या तुम वो चैप्टर बोल पा रहे हो, बताओ इस पे क्या क्या था, ये था ये था ये था, अंदर का बताओ क्या क्या था. सीएफए इज नॉट अबाउट दिस. आपको चैप्टर बोलना नहीं आना चाहिए, आपको रिकलेक्ट नहीं करना है. अपने आप ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, आपका जो इंटरनलाइज हो चुका है वो बाहर आएगा. 2 days prior to the exam, we tell the students, do not study at all. जबकि आपको पता है सीए में क्या हाल होता है. अगर 16 दिन 18 दिन एग्जाम चलता है और बाई चांस अगला लास्ट में जाके बीमार पड़ गया, बुखार हो गया, चाहे वो जितना ही पढ़ा था वो पास नहीं हो पाएगा. इट हैज हैपेंड विद सो मेनी पीपल. इट्स टॉर्चरस.
CFA program is not torture, especially for people who take it in a slow manner, जो अपने स्पीड के अनुसार खाना खाते हैं, खाने को गल्प नहीं करते, वरना इंडाइजेशन होगा. Okay, so it is a wonderful program, and I believe that for this program, I would say that everybody should do it. An engineering student, okay, a student from the medical background, a student from the legal background, okay, a student who is just doing BCom or BBA, whatever, every student should pursue the CFA program. Okay, that's a fact, because everybody has to manage wealth, everybody have to grow their wealth. Why would you just listen to mutual funds and invest via mutual funds? You should have the caliber of managing mutual funds yourself, where people give their money to you and you are making and creating wealth for them. Okay, that's a different level of satisfaction altogether. Mayank Sharma is asking, can we have a demo lecture and all that? Demo to तभी होगा जब class start होगी. But Mayank, the point is that जो बाकी classes so called industry में है, those classes are of how many hours? Those classes are of these number of hours only, 200, 250, 300 hours. Do those classes have audio summary? Do those classes have chapter wise test? Do those classes have topic wise test? Do those classes have the doubt of doubt clarification? Do those classes have myself, Sanjay Saraf, embedded in them? Okay, so I don't know. So this was my initial submission. CFA is a great career. There's no doubt about choosing the CFA program. And secondly, मेरे को तो ऐसा लगता है आज के डेट पे कि अगर CFA प्रोग्राम आपने मेरे से नहीं किया, संजय सराफ सर से नहीं किया, तो you don't miss out something. You miss out a lot. You may feel that it's an egoistic statement. आप बहुत ईगो के साथ बोल रहे हैं, but it's a fact. मतलब छोटे से गांव में जाते ना, भारत में किसी छोटे से गांव, एकदम छोटा सा छोटा गांव, एंड वहां पे कुछ मिले या नहीं मिले, आपको पेप्सी और कोको कोला का बोर्ड दिख जाएगा. तो जब वो लोग वहां तक पहुंच गए हैं एडवर्टाइजमेंट करने में, तो मैं अगर कुछ अच्छी चीज करा रहा हूं, उसको डंके के चोट पे क्यों नहीं बोलूं? Why shouldn't I? Why should I compromise and show humbleness over here in area which is mine, which I have conquered for the last 30 years? Okay, this is not a CA ka course jahan pe there are 6 or 8 subjects and mine is just one subject. Okay, here all the subjects are mine. I've CHOfied it for the last 30 years. I will ensure that if you are really passionate, you want to dip and immerse into the field of finance, okay, you will get that immersion full scale. So this was my initial submission. Having said this, I will request Buddhaditya, who is the teacher from our side, as well as Shubhankar, who is our organic marketing head, to share some doubts of students, okay, which you can articulate well, ki what are the students asking. वैसे doubts का reply are also going on the comment section. Our counselors ka numbers are being shared on the comment section. You can see the counselor ka number in the comment section in case you wanted to talk later on. How many hours I have to devote? You know, first thing, when you say how many hours I have to devote, I get a negative connotation out of it. I get a feeling that you're not wanting to devote too much. The fact that you have to devote 250 to 300 hours in my classes as compared to 600 plus hours, that is a bonanza, because it seems you are in short of hours. उसके अलावा आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा. You have to study another 300 hours at least. 300 hours, we will teach 300 hours you have to study. But sir, I have read in the CFA Institute website that total time required for preparation is 250, 300 hours. But you are saying 250, 300 hours tuition, 250, 300 hours self-preparation. So you do something. Don't do the live classes. When the live classes are uploaded, then do the video recorded classes at 1.25 or 1.5 speed. Then you make our classes around 175, 200 hours. Maybe you are capable of watching at speed. So you have to, maybe you have some base in certain topics which you would like to drive yourself. Sir, मैं QM नहीं करूँगा, मैं champion हूँ, engineering किया हुआ है. सर मैं FSA नहीं करूँगा, FSA मेरे को आता है. Okay, मेरा CA का background है. So there you can save some hours. So how many hours will you devote depends on your pickup speed, your capacity, your efficiency. How do you study? What's your studying style, and so on and so forth. What are the different kinds of batches? There are two kinds of batches we have.
One is full immersion batch, which is 600 hours plus का, which is भगवत गीता. उससे बेटर कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ है. The second is the live focused batch Saturday Sunday, which is made generally for people who are working people who don't have time and who seem to feel that they don't need spoon feeding. उनको स्टैंडर्ड क्लासेस चाहिए, ओके, संजय सराफ सर के स्टाइल में. Some students are existing students, they are saying मेरा 5 टॉपिक हो गया पर मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे. This webinar is not meant for that. Muskan has put in some doubt. I hope we are replying to the same. So Shubhankar or BD, if you feel that there is some doubt which I should take up, you all are the ones who are supposed to share the doubt with me vocally. Like this particular person has asked this doubt and I will clarify the same. Hi, sir. Hi. So there's a typical doubt that is going on, and that is somebody has done FRM, and that person has done his graduation as well. So the doubt is whether he should go for the live focus batch or whether we should go for the full immersion batch. Okay. Now, given the background in FRM, there will be an advantage in quantitative methods. Okay, QM would be easier. Obviously, the author is different, but QM would be easy. Secondly, there will be some advantage in fixed income. I won't say the whole advantage because over here, fixed income is in a different domain altogether. But QM, there's a distinct advantage. Plus a little bit advantage in portfolio management. But FSA, there is nothing of FSA in the FRM curriculum. No equity is there. No alternate investment is there. Some hedge fund is definitely there. Then we do not have the ethics portion, the economics portion. So basically, it depends upon how much time you have and how much depth do you want to get into. If you feel you're a type of person who can take things in your own stride, I think the life focused batch is suitable for you. But if you think that no, FSA, economics वगैरह बहुत शिद्दत से करना है, जैसे सर करवाते हैं, जैसे सर के क्लासेस है यूट्यूब पे, तो in that case you have to go for the full immersion batch. I think recently in the full immersion batch, we had started a new product. What is the product? That CFA level 1 for engineers and stats background students. So that product you can go for in the full immersion. उस product में हमारा QM नहीं होता है. ठीक है, QM is not there in that product. You can check it out. Class plan specifically which subjects you will be covering. Class plan specifically. Now that is something we have maintained flexibility, but I intend to cover QM. मैं QM cover करूंगा ये live focused batch में, and I intend to cover derivatives. QM और derivatives तो definitely मैं cover करूंगा. ठीक है, perhaps one more topic. That is what I have thought upon. ठीक है, that QM plus derivative. QM is very big. Anurag Sharma sir is a chartered accountant. He'll be doing a brilliant service to FSA, corporate issuers, उन दोनों topic में, and ethics, while BD, Buddhaditya, who is a champion, he's going to cover the asset classes, equity, fixed income, alternate investments. Yes, BD, is there any other doubt that you think I should address? ऋषि एक स्टूडेंट है, उसने बोला सर आई एम अ सीए स्टूडेंट, आई एम जस्ट स्टक इन सीए. दैट इज द प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज दैट एवरीबडी टीचर्स यू संक कॉस्ट, कि संक कॉस्ट इररिलेवेंट है डिसीजन मेकिंग में. बट द फैक्ट इज दैट रियल लाइफ में कोई स्टॉक खरीद लेता है, वो स्टॉक लॉस पे चला जाता है, यू कांट सेल इट ऑफ बिकॉज संक कॉस्ट पेन. वैसे ही आपने एक गलत कोर्स ज्वाइन कर लिया, आप उसमें पिछते जा रहे हो, हर 3 महीना 4 महीना में टर्म आते जा रहे हैं, 2000 या 3000 एग्जामिनेशन फीस लगता है. लग रहा है क्या? अरे तुम्हारा टाइम जा रहा है, तुम्हारा जो पूरा पैशन जा रहा है, तुम्हारे जो सारे एस्पिरेशंस थे वो जा रहे हैं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कोई खराब कर रहा है. हाउ कैन यू लेट इट हैपन? दैट्स योर पर्सनैलिटी. डोंट मेक इट हैपन. देयर आर मेनी पीपल हु आर अननेसेसरली wasting their time in the chartered accountancy profession trying to
take up typical clerical jobs in future. I won't say that all CAs are going to land up over there, but many of the chartered accountants are going to land up over there in this world of AI. And I really feel bad about them. Hello, sir. Yes, So there is somebody who has mentioned that the world is driven with AI and AI is capable of doing many things such as generating reports, managing portfolio, etc. How does the CFA will add value to such careers? Should we do any other AI courses? definitely AI is going to have a paramount effect in throwing away those people who are doing repetitive clerical jobs. When you talk about repetitive clerical jobs, accounts is definitely one of them. There's no doubt. Typical audit is also one of them. There's no doubt about it. Even in the financial profession, as in the CFA profession, those people who just prepare earnings report, who just prepare, summarize the con call, their jobs are also going to be at stake or they are going to become clerks. So when we are talking about the CFA program, we are not talking about summarizing reports or preparing just earnings call. We are talking about going really deep into company analysis, into meeting company's management, into unearthing the true character of the company and whether the company is worth investing or not. It is a judgment which AI will help but will not replace. Okay, in any field whatsoever, AI is going to replace people who are doing repetitive, non judgmental work. When you asked about the fact that should we do AI courses, answer is yes, you should. In fact, SSCI is going to come out with a program called Analyst Stack. It's good that I remember to share with you. Analyst Stack. Analyst Stack, I said. So there is a stack of skills which analysts should possess, where one stack is financial modeling, not the type which is happening in the marketplace. The second type is deep investing skills. Okay, that's a paramount portion. Okay, in which we cover value investing, growth investing, okay, sector primers like anything. And the top of the pie is this was being done earlier also. How is AI going to make all this efficient? So, third is AI, and the fourth is obviously career oriented. How do you get a job? How do you progress from one job to the other? So, there are four parts to the analyst stack. It will be launched soon. We are just perfecting it to the extent possible, okay, before we announce the launch of it. Just wait for it for a couple of months. So I think you should be doing a course which is AI in finance rather than AI in general. So there is one more doubt, sir, if I can just speak it out. Yes, Yeah, please. so there is somebody who is a qualified chartered accountant and he is from SSCI only and he has cleared all the levels of the chartered accountancy exam in the first attempt and currently working as an internal auditor in a particular startup. He did the webinar of CFA, deeply interested, can devote 20 to 40 hours per week alongside managing the work, right? So is kind of confused whether he should go for the full He immersion or should, weekend. he should 100% go for the full immersion program. Believe me. What's the name of the student in case you can recall so that I can address him? His name is Prabhat Kumar Gupta. Okay. Hi, Prabhat. How do I explain to you that for the last 20 years, people of CA background have been doing CFA with me? Right now, one of the brightest students that I have is Shubhkant Upadhyay. He did his CA, completed CA in 2018, studied with me in 2013, working in Bangalore, 7 years ka work experience hai. Okay, and this guy, now that he's doing CFA, the type of pickup that he's having in economics, QM, FSA, मतलब जस्ट इमेजिन कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा है और मैं उनको इनकम स्टेटमेंट सिखा रहा हूँ, बट इट इज नॉट इनकम स्टेटमेंट, इट इज एनालिसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट. और सीए में एनालिसिस के नाम पे क्या कराया गया? रेशियो एनालिसिस, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ओके, नेट इनकम डिवाइड बाय सेल्स. इज दैट एक्चुअली इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस? बैलेंस शीट का एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस, पेंशन अकाउंटिंग, ठीक है, ईसॉप्स का एनालिसिस, वो सारा का सारा है ही नहीं. तो आई थिंक आप सेटिस्फाइड तभी होगे जब आप फुल इमर्जन प्रोग्राम करोगे. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपको? बिकॉज आपने 20 to 40 आवर्स पर वीक बोला. नंबर टू, आपने सीए किया है, मेरे से किया है.
तो आपको पता है कि आपको कैसे सेटिस्फैक्शन मिलता है। उस तरह वाला सेटिस्फैक्शन जो माउंट एवरेस्ट वाला है ना, वो तो फुल इमर्जन में है। डज इट मीन दैट लाइफ फोकस्ड बैड है? नहीं, बैड नहीं है। बट जो एक समय देते हैं ना, ओके, वो जिनके पास समय देने के लिए है, उनको फुल इमर्जन में ही जाना चाहिए। जिनके पास समय नहीं है देने के लिए, जैसे somebody has say 8 to 10 hours a week to devote, तो ऑब्वियसली उसको इसमें जाना चाहिए। सिंपल जवाब। जिसके पास 8 to 10 hours a week है, should go for the life focused batch. जिसके पास है 20 plus hours to devote per week, they should go for the full immersion batch. Darshan is saying, I am an existing SSA student. I have a great backlog of lectures. So what is to be done? Oh, maybe you're asking, should I shift to the life focused batch? We did not think about this at all कि कोई full immersion से life focused पे shift करना चाहेगा तो whether we should have that provision or not, we will take a call after this particular session. Okay, right now we don't have any provision. मतलब it's good that you asked. It never came into our mind. Can we go for one last question, sir? Yeah, there is no issue at all. मतलब Okay. believe me, my family has slept. Okay, I'm the only one awake. There is no constraint of time. ठीक है, we can go on. Right, great. So there is one person who mentioned that he is from an arts background and who is a working professional as well, and is already holding an MBA in marketing from a tier 2 college. So which batch would be most suitable for him, full immersion or live focused? And what level of CFA should I do till, especially with AI changes? I'm not very sure on what he is trying to ask. That's fine, no issues. Yeah. First of all, uh, Buddhaditya will remember that we have spent so much of time in discussing how CFA program is so artistic, which means that it is not just symbols and formulas that you put and you get an output. It is so much of judgment involved, where anybody with an art background comes with a different type of type of perspective altogether. Okay. Uh, and therefore, we say that CFA program is more of a craft rather than an art or a science. Anyways, having said that, first of all, welcome to the CFA family. I would like you to really join the CFA program, and you will find that you will love it. You will feel that, matlab, it is a dimension of art. Secondly, your question about which batch to join lands up to the same reply which I gave earlier, that if you have only 10 hours, 8, 10 hours to spare in a week, which means roughly 1.5 hours per day, go for the life focused batch. But if you have time to devote 20 plus hours, go for the full immersion batch. Okay. And anybody who joins the life focused batch, and in case after joining for 2 or 3 weeks they feel that no sir, YouTube में वीडियो देखे थे आपका, वैसे जैसे आप पढ़ा रहे थे ना, एकदम धीरे धीरे रुक के नाम लेके, वो मेरे को करना है, वी विल अलाउ द शिफ्टिंग। ओके, विल अलाउ द शिफ्टिंग। सो ऐसा नहीं कि फंस जाएंगे, फंसने का बात कुछ नहीं है। इफ somebody joins the life focused batch and they feel after 2 or 3 weeks that नहीं सर अच्छा पढ़ा रहे बट अपने को वो हौले हौले करना है, वो वाला चीज, इफ यू अंडरस्टैंड द वर्ड हौले हौले, तो इन दैट केस वी विल मेक अ प्रोविजन फॉर शिफ्टिंग यू टू द फुल इमर्जन बैच। ओके, बट जो एग्जिस्टिंग फुल इमर्जन बैच कर रहे हैं, उनको लाइफ फोकस बैच में शिफ्ट करने का हमने सोचा नहीं था। ठीक है, वो एक दर्शन नाम के स्टूडेंट ने ही बोला, वी विल हैव टू कम आउट विद सम रूल्स इन दैट रिगार्ड। ठीक है, सो नोबडी शुड वरी। बट वैसे मैंने बता दिया सब। द मेन क्राइटेरिया इज, डू यू हैव टाइम? इफ यू हैव टाइम, यू विल लव द फुल इमर्जन बैच। मतलब कैसे समझाऊं मैं, हाउ डू एक्सप्लेन? कोई भी चीज को ना, एक तो होता है बताना, एक होता है बताने के बाद ठहरना, ठहर के उसका एग्जाम्पल लेना, रियल लाइफ एनालॉजी लेना, क्वेश्चंस करवाना, ये फुल इमर्जन बैच में होता है। लाइफ फोकस बैच में बताए, क्वेश्चन करवाए, बताए, क्वेश्चन करवाए, बाद में डाउट सॉल्विंग लिए, ठहर नहीं पाएंगे। होता है ना, रुक जाइए, वो ठहर नहीं पाएंगे। Yes, Buddhaitya, any other interesting doubt that you can see? I call Buddhaitya Buddhaitya. That does not mean that he's a student. Believe me, he is a academician and a
I would say a combination of academics plus practical of the highest degree. And when you study with him, God, mind boggling. He will just open different spheres. And if you want to experience the same, please, I will request BD, please share one of your PSM lectures link over here so that people can uh, watch the same. PSM lecture का link जो है यहाँ पे डाल दो. Sure, I'll do that. Full immersion program, will it be during daytime or in weekdays? Okay, ध्रुव. फुल इमर्जन प्रोग्राम जो है ना हमेशा एक हाइब्रिड बैच होता है. वो फुल लाइव नहीं होता है. इट्स अ हाइब्रिड बैच. क्यों सर? वो फुल लाइव क्यों नहीं होता है? वो फुल लाइव इसलिए नहीं होता है बिकॉज फुल लाइव मैं करा ही नहीं पाऊंगा उसको 6 महीने में. ये तो बैच चालू हो रहा है 17 जन और खत्म हो रहा है जून मिड ना. वो हो ही नहीं सकता. 600+ आवर्स कैसे करा दे? तो अकॉर्डिंगली उसकी क्लासेस करीब 4 5 6 माने 4 5 6 7 बेटर ना 6 7 6 7 आवर्स अ वीक होती है. ओके, उसके अलावा वीडियो रिकॉर्डिंग भी शेयर होता है. तो जिन लोग 1 साल 1.5 साल के बाद एग्जाम देंगे, दे एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ लाइव क्लासेस. जिनको जल्दी एग्जाम देना है, दे एक्सपीरियंस द लाइव क्लासेस बट दे ऑल्सो डू इट वाया द प्री रिकॉर्डिंग्स विच आर शेयर्ड. ओके, सो द फुल इमर्जन बैच इज अ हाइब्रिड प्रोडक्ट. कितना हाइब्रिड, कितना लाइव, कितना वीडियो, डिपेंड करता है कौन किसको कब एग्जाम देना है. जिसको बहुत देरी से एग्जाम देना है, इट प्रिडोमिनेंटली लाइव. जिसको जल्दी एग्जाम देना है, उसका कुछ लाइव है, बाकी वीडियो है. ओके, I dropped out from bachelor and also from CA inter few days ago. I think this doubt came, Raj, recently. You're qualified, you can appear for CFA program, there's no issue. I think the reply had gone to you. I am a first year student pursuing economics honors from DU. Akhaj is asking. So what I feel, while seeing your doubts, पूरा doubts read नहीं कर पा रहा हूँ उतनी देर में और doubts आ जा रहे हैं. ठीक है, is that some of you require some sort of interaction or counseling. And if you think you require, I think we are sharing the number in the chat with you. Throw up your doubts and let's discuss as to what your unique situation is. And plus, do remember that क्या चीज का रिस्क है. मेरी जो फुल इमर्जन क्लासेस है यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस, आप मेरे पढ़ाने के स्टाइल वहां से देख सकते हैं. जो लाइव फोकस्ड बैच है उसका अगर आपने ज्वाइन कर लिया और किसी कारण से आपको लगा नहीं नहीं हम लोग को फुल इमर्जन वाला चाहिए, तो इन दैट केस यू शिफ्ट. बट आई थिंक ये नौबत नहीं आएगा बिकॉज इट विल हैव अ डिफरेंट टेस्ट एंड फ्लेवर ऑल टुगेदर. Okay, Krishna is saying that I watched building block classes in 2 days. Great going, beautiful. कोई कोई स्टूडेंट्स है जो बिल्डिंग ब्लॉक क्लासेस एक दिन में देख लेते हैं. I think I have significantly answered the queries. Your data is available with me. Those who are watching this lecture on YouTube, अगर ये YouTube पे होस्ट होता है और जो लोग YouTube पे वॉच कर रहे हैं, request you all to put your comments. If you have some query, we will reach out to you. Okay, because unless and until you put in your comments, it's very difficult to reach out to you. Okay, those who have filled up the Google form, they are fine, we have your data, so interaction is possible. But those who will be watching on YouTube, see, there are so many students in the past, now I recollect, who had said that sir आपका एक वेबिनार करने से लाइफ चेंज हो गया. मैंने बिलीव मी, ऐसे लोग हैं और मैं सुना रहा नहीं हूं, मैं याद करके बोल रहा हूं उनको. अगर आपने CFA प्रोग्राम नहीं किया, कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी आप लाइफ से संभावना खोएंगे जिसका कोई लिमिट नहीं है. इट इज टू गुड. एंड CFA प्रोग्राम बाकी जगह पे कैसे हो रहा है, मतलब बहुत ही रबिश तरीके से हो रहा है, जहां पे इट इज प्रिज्यूम्ड दैट सिंस 1 लाख 1.5 लाख CFA इंस्टीट्यूट को देना पड़ता है, तो बंदा अपने आप ही सिंसियर होगा, स्क्वाइजर वगैरह से रट रट के पढ़ेगा, पास हो जाएगा. बाकी लोग फेल हो जाएंगे, कोई बात नहीं, जो पास होंगे ज़्यादा उछलेंगे और गाड़ी चलती रहेगी. ये तरीका हो रहा है CFA पढ़ाने का. इट इज़ नॉट स्टडीज एट ऑल, इट इज़ नॉट टीचिंग.
एंड इफ यू डोंट बिलीव मी, व्हाई डोंट यू कंपेयर? जस्ट गो टू द यूट्यूब और टीचिंग वाला वीडियो वॉच करना, बाकी चीज नहीं, टीचिंग वाला वीडियो. See some video of mine, see some video of anybody else in this globe, okay, and compare the two video, and you will be able to see. I'm not asking marketing video. We are not champions in marketing. हमारा marketing सबसे खराब है because we don't pay attention to marketing. We pay attention to hardcore teaching. अभी 15 से CFA लेवल 2 का बैच स्टार्ट है, 17 से CFA L1 का लाइव फोकस बैच स्टार्ट है, फुल इमर्जन बैच ऑलरेडी चल रहा है, CFA लेवल 3 बैच 25 से स्टार्ट है, ठीक है, एनालिस्ट टैग स्टार्ट होने वाला है. तो वी आर हार्ड कोर इनटू टीचिंग 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 एंड टीचिंग. And therefore, we may not be prominently displayed on Google AdWords and so on and so forth, but it doesn't matter. But we repent people who do not watch our videos, at least on YouTube, because then they miss out a lot. So with this, I will bid goodbye to all of you. Good night. Hope that I am able to create some passion or fire within you of joining the CFA program. एंड CFA प्रोग्राम में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या नहीं होते, मैंने ये सब बातें नहीं की है इसमें. देर आर अदर वीडियोज CFA का ऑन यूट्यूब जिसमें मैंने वो सब बातें की है, ठीक है. यू कैन वॉच माई ओरिएंटेशन क्लास विच इज़ देयर on YouTube regarding the CFA program. You can watch my ethics ka first class. You can watch my derivative ka first class. You can watch my QM statistics ka first class. Okay, you can watch equity का करीब 15-20 क्लासेस दिया हुआ है यूट्यूब पे, ठीक है. यू नेम इट एंड यू हैव इट. सो थैंक्स अ लॉट फॉर attending the session. It is Sunday evening. You must have had family commitments, but you have given around 1 hour to me. I will be forever grateful for the respect shown. And thanks a lot, Shubhankar, for keeping out this 1 hour on Sunday and doing this overtime. And BD, no thanks to you at all. एकदम भी thanks नहीं है तुमको, because I know that you are a type of person जिसका Sunday और ज़्यादा improve हो जाता है as a result of our common effort into whatever we do. You know the number of projects we are collectively working on and what happens to us, the goosebumps that we have every day when we work upon that. So I'm not saying thanks to you at all. Okay. So you are enjoying the same. You should thank me. Okay. So, Right. Thank you, sir. yeah. So that's it from my side. See you all in some way or the other, either as CFA full immersion or CFA level 1 live focused batch or the analyst track. When I say or, it is not English wala or, it is Hindi wala or, ठीक है. Because analyst track is something जिसमें CFA से मतलब ही नहीं है. हर बच्चा करना चाहिए जो केवल BCom कर रहा है, ओके. पापा लोग को करना चाहिए कि यार प्रैक्टिकली कैसे इन्वेस्ट होता है, चलो देखें, ठीक है. ओके, सो थैंक यू, बाय बाय.